So today we are going to do online practical astable multi-vibrator. Design and set up an astable multi-vibrator. Aim मैंने बता दिया. What is multi-vibrator? Multi-vibrator is considered as non-sinusoidal oscillator. Oscillator means which convert DC into alternating current. अब अल्टरनेटिंग करंट एसी और ये साइनोसॉइडल भी हो सकती है, ट्रायंगुलर भी हो सकती है एंड आपकी स्क्वायर भी हो सकती है. तो ये मल्टी वाइब्रेटर हैं, ये नॉन साइनोसॉइडल, मतलब जो आपके घरों में, हमारे घरों में जो एसी आ रही है अल्टरनेटिंग करंट, वो है साइनोसॉइडल. जो मल्टी वाइब्रेटर हैं ये आपके स्क्वायर वेव जनरेट कर सकते हैं, ट्रायंगुलर वेव जनरेट कर सकते हैं और बहुत सारी तरह के वो वेव फॉर्म होते हैं जिन जो हम इनसे जनरेट कर सकते हैं. ये इसमें यहाँ पर यही बताया गया है. नॉन साइनोसॉइडल ऑसिलेटर विच कैन जनरेट वेव फ्रॉम अदर देन साइन वेव. दे आर बेसिकली टू स्टेज एम्पलीफायर विद पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम द output to one amplifier to input other. This feedback is supplied in such a manner that one transistor is driven to saturation and other to cutoff. If you remember output characteristic of a transistor, there are three regions. One region cutoff region, another saturation region, and in between active region. In active region, one junction in forward bias and other in reverse bias. Emitter base junction always forward bias and base collector junction remains always in reverse bias. But in saturation region, both the junction in forward bias, and in cutoff region, both the junction in saturation region. So here transistor is driven to saturation on state and other to cutoff off state. Once transistor goes in cutoff, that is off state, means both the junction in reverse bias. And if transistor jumps to saturation region or saturation means on state, both the junction are in forward bias. The action is reversed after a certain time depending upon the circuit condition. That is saturated transistor is driven into cutoff and cutoff transistor is driven into saturation region. दो ट्रांजिस्टर हैं, एक सैचुरेशन में है, दूसरा कटऑफ में है. कुछ टाइम के बाद जो कटऑफ वाला था वो सैचुरेशन में चला जाता है, जो सैचुरेशन वाला है वो कटऑफ में आ जाता है. तो तीन तरह के, देयर आर थ्री टाइप बेसिक मल्टी वाइब्रेटर्स: astable, monostable and bistable. As you can see, their name suggests astable means there is no stable state, monostable one stable state, bistable two stable state. It is also called free running relaxation oscillator. Astable multivibrator also called free running relaxation oscillator. So this, ये आपने इनपुट में लगाई हुई है डीसी, आउटपुट में आपको इस तरह से एक स्क्वायर वेव मिलेंगी. ये जब एक ट्रांजिस्टर आपका सैचुरेशन में है, दूसरा कट ऑफ में है, ये जब पहले वाला कट ऑफ में आ जाता है, दूसरे वाला सैचुरेशन में आ जाता है. ये वेव फॉर्म इससे मिलके ये सर्किट डिजाइन है RC1, R1, R2, RC2. एक output of one give feedback to the another. And you can take output from either VC2 और VC1. किसी भी एक ट्रांजिस्टर से आप आउटपुट ले सकते हैं, अकॉर्डिंगली आपका चेंज हो जाएगा. ये चार कैपेसिटर यूज किए हुए हैं, सॉरी 4 रेजिस्टेंस यूज किए हुए हैं, 2 कैपेसिटर यूज किए हुए हैं. ये सर्किट डायग्राम है. सर्किट डिटेल्स, हाउ इट्स वर्क. पहले एक
सैचुरेशन में रहेगा, जो भी पहले सैचुरेशन में आ जाएगा दूसरे को कट ऑफ में ले आएगा। उसके बाद जो आप ये कैपेसिटर है इसका काम शुरू होता है, ये डिस्चार्ज होता है, इसको सैचुरेशन में लाता है, ये अपने आप कट ऑफ में आ जाएगा। फिर इस कैपेसिटर का काम शुरू होगा, ये डिस्चार्ज होगा, इसके थ्रू इसको इसकी करंट बढ़ाएगा, इसको सैचुरेशन में ले जाएगा, तो ये कट ऑफ में हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये वेव फॉर्म मिलता चला जाता है। ये यहाँ पर दिखाया गया है पूरा, इस यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर। आल्सो कैलकुलेट दिस टाइम ऑन टाइम ऑफ Q1 on off time of Q1, total time, resistance, what is the relation, design, waveform। ये different waveforms है which we can get। Now we go to simulation। It is very simple as in all the practical। Here we have a board and some component। First we place battery and connect its wire। Okay, like this। This boards mainly contain 4 parts: 1, 2, 3 and 4। So in first part the continuation is from left to right or right to left, and in fourth part also, but in second and third part upward to downward or downward to upward are all are continuous। Means you can take, if I connect this wire here, so I can take connection from any one of these holes। This whole line is positive now। Similarly, I can connect negative terminal of battery from here। So the upper line is positive and lower line is negative। To show you, if you connect both these in one line, what happen? I show you by connecting both in one line। So what happen? Your battery will burn out। This means this whole line has same voltage। So I have to delete this and reconnect it। Here, okay, so upper line is positive and lower line is negative। Now I need 4 resistance: RC1, R1, RC2 and R2। So I place these 4 resistance here: 1, 2, 3 and 4। Connect these all 4 by pressing and you can see from the circuit we need 2 capacitance, 4 resistance RC1, R1, R2, RC2 and 2 capacitance। I place 1 capacitance here and 1 capacitance here।
by which we give positive feedback to the base of. So let us connect these resistance with. Okay, next. One similarly, I connect this and okay. So R1, RC1 and R1 in between C1, R2, RC2, C2. Next, now I place these two transistor here, first one and second one, by pressing one. The emitter of both the transistor are interconnected and connected to ground. So first I connect transistor. Okay. Ground means negative terminal of battery. So I have to take negative supply from here to here. So now these emitters of both transistor connected to ground. Now RC collector to RC1 and base of this transistor is connected with output of second transistor, and base of this second transistor is connected with output of first transistor. So let me okay. Similarly, base and collector to RC2
Now I have to take output. I can take output either from VC1 or VC2. So let me take it from VC1. And now this circuit is complete. Output should be connected with CRO to see the waveform. So now I connect the output of this to a CRO. Like that. Like that. Now I have to see show CRO. So in CRO we can see the waveform. Something is CRO. सर इसमें एमीटर टर्मिनल ग्राउंड नहीं है अभी. ओके अभी एक मिनट. अब now we have to check CRO. Here you can see the square wave. You can measure its frequency point. This is this pointer. You can change this pointer by clicking on these. Now it is 0.5, 0.2, 0.1. So it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0.7. 7 multiplied by 0.1, so it's 0.7 millisecond. Now if I change RC1, I change the value of RC1 to 1000 ohm to 2000 ohm. लगभग nearly 2000 ohm. You can see the shape of square wave is changed.